most in chapter के अंदर what we have to understood, this lecture is related with the factor and transfer payments. Okay, basically again it is on the basic concepts of macroeconomics. Now moving further, what does the factor and transfer payment means? First, what is transfer payment and why it is excluded in national income? First, see word से समझ में आ रहा है कि ट्रांसफर है, ऐसी चीज जो कोई प्रोडक्टिवनेस नहीं क्रिएट करती. जैसे सपोज टेक फॉर द एग्जांपल, हियर इट इज गिवन पेमेंट फॉर व्हिच no productive service are concurrently provided in exchange. Means if I am providing service and then I am receiving payment, then that would be a factor payment. But if I am not providing any service, okay, मीन्स अगर आप कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो और तब भी आपको कुछ एक्सचेंज में मिल रहा है, टेक फॉर द सिंपल एग्जांपल स्कॉलरशिप. इफ स्कॉलरशिप इज रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट ने उसके लिए कुछ मेहनत करी, maybe suppose in the form of sports, but he has not given the service to the institution, he was working for his own career, but he has been provided scholarship. So scholarship क्या हो गया? Scholarship is also a form of transfer payment. Old age pension is also one of the good example of transfer payment. Old age pension भी आपका क्या है? एक तरह का एक अच्छा example है. Okay, old age pension is also a very good example related to your transfer payment. Now moving further, let us understand what these other things include and exclude. Means for a redistribution for income, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है tax payers and your needy. टैक्स पेयर टैक्स पे कर रहा है एंड नीडी को क्या मिल रही है? सब्सिडीज. तो सब्सिडीज आर आल्सो नोन एज ट्रांसफर पेमेंट. ओके, now moving further is there is an example of factor payment. See, the example here is a teacher wage is a factor payment and would be included in GDP. आ रहा है ऋषिका समझ में that what is this particular thing? Yes, sir. Now what they are saying that it is factor payment. फैक्टर पेमेंट मतलब उसके लिए टीचर ने सर्विस प्रोवाइड करी थी. स्कॉलरशिप के लिए एक स्टूडेंट ने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, वो तो इंस्टीट्यूशन ने खुद दी है उसको, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट. बट द फैक्टर सर्विस जो टीचर प्रोवाइड करवा रही है, दैट फैक्टर सर्विस इज दैट पर्टिकुलर थिंग इन विच वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है एंड द स्कूल इज पेइंग सैलरी टू दैट टीचर. तो ये क्या हो जाएगी? दिस विल बी नोन एज योर फैक्टर पेमेंट. Factor payment. Next is welfare payment to poor is the payment not in return of a service. Now here is another example, that is welfare payment to poor. Take for the example, if you are donating something, तो आप डोनेशन अपनी मन से दे रहे हो, उसमें रिटर्न में आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो आपको आगे सर्विस देके जाए. That's why it will be known as transfer payment. और एक चीज याद रखना, factor payments are only included, transfer payments are excluded while calculating national income and GDP. हम factor income को भी क्या करते हैं? We are only including factor income and we are excluding what? We are excluding the welfare payments, or we are excluding what? We are excluding the transfer payments. हम factor payments को ही include करते हैं. Factor payments पहले बता चुका था, 4 factors of production. 4 factors में कौन कौन से 4 factors हैं ऋषिका? If you know, what were the 4 factors of production? अब याद आया? Sir, land, employment. Land, labor, capital, Employment, and entrepreneur. Okay, entrepreneur. इनके पेमेंट्स याद है? लैंड का हाँ पेमेंट, sir. लैंड का पेमेंट, रेंट, Rent. लेबर, Entrepreneur का profit. ओके, लेबर का Salary. सैलरी और Wage. वेजेस, ओके, कैपिटल का Capital का investment. इंटरेस्ट. ओके, सो ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल फैक्टर पेमेंट्स. मतलब अब आगे देखेगी जब कैलकुलेशन होगा, सो दीज ऑल विल बी इंक्लूडेड, whether it is rent, whether it is salary, whether it is interest, whether it is profit, these all will be included while calculation of what? While National income, GDP.
वेलफेयर पेमेंट जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया, उसे हम कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे रिलीफ फंड कंट्रीब्यूट करा, अब मैंने पीएम मोदी फंड में डाला, पीएम केयर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करा, तो जितना भी आप पीएम केयर फंड में दे रहे हो वो आपकी इनकम में से ही दे रहे हो, तो वो पीएम केयर फंड पे जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा उसको मैं ट्रांसफर पेमेंट मानूंगा, उसको मैं फैक्टर पेमेंट नहीं मानूंगा। Now, moving further is difference, as you can see, the factor income and transfer income. अब देखो फैक्टर इनकम के ऊपर ही लिखा हुआ है दीज आर बायलेटरल पेमेंट्स। क्यों बोला बायलेटरल पेमेंट्स? बिकॉज दोनों तरफ से है। एक टाइप अगर एक तरफ से रियल फ्लो जा रहा है तो दूसरी तरफ से क्या आ रहा है मेरे पास? मनी फ्लो। ओके, मनी याद फ्लो। है रियल फ्लो मनी फ्लो? हाँ। और यहाँ यहाँ से तो मेरे को सिर्फ मनी फ्लो मिल रहा है, मैंने अपनी तरफ से कोई रियल फ्लो नहीं प्रोवाइड करा है। टेक फॉर द एग्जांपल सब्सिडीज रिसीव बाय द गवर्नमेंट। अब सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है बिकॉज दैट इज टू बी एज अ राइट ऑफ सिटीजन, बट क्या सिटीजन ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी गवर्नमेंट को उसके लिए? No. नहीं। So in this case, that will be known as what? That will be known as your transfer payment. Next point, इसमें अब जो first point दिया हुआ है, payment received, paid in return of a factor service. अगर आपने कोई factor service provide करी है, तो जाके आपको एक factor income मिलेगी। When coming to transfer income, payment received or without any goods and services in return, मतलब आपने कोई गुड्स एंड सर्विस दी नहीं है तब भी आपको पेमेंट मिल रहा है, तो वो एक तरह का क्या हो जाएगा? ट्रांसफर इनकम, उसे हम फैक्टर इनकम नहीं मानेंगे। सेकंड पॉइंट, सिंपल, रीड आउट द सेकंड पॉइंट ऋषिका। Factor income included in national and domestic income. Transfer income not included in national and domestic income. मीन्स इट इज वेरी मच क्लियर दैट आपकी फैक्टर इनकम हमेशा इंक्लूड होगी और ट्रांसफर इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट इज एग्जांपल, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। जैसे अभी मैंने बोला ही था फैक्टर पेमेंट्स क्या होंगी, सारी की सारी फैक्टर इनकम। देखो सी हियर देयर आर टू पॉइंट्स। मैं अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरे लिए तो फैक्टर इनकम है, लेकिन जो पेमेंट दे रहा है, सपोज माय उसके लिए एम्प्लॉयर ट्रांसफर एम्प्लॉयर इज इनकम है। गिविंग मी वेजेस, एम्प्लॉयर इज टेकिंग द प्रॉफिट, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? फैक्टर पेमेंट। ट्रांसफर इनकम। Okay, and here you have old age pension. अब there is very much great difference between retirement pension and old age pension. अभी इस टर्म को याद रखना, अगर old age pension है तो वो ट्रांसफर इनकम है, अगर रिटायरमेंट पेंशन हो जाता है, दिस वाज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट इन सीबीएसई। अब इसमें याद रखना ओल्ड एज पेंशन ही आपका ट्रांसफर इनकम है, आपका पर्टिकुलरली रिटायरमेंट पेंशन इज नॉट दी पार्ट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तुमने ये नरेगा में पढ़ा है, एमजी नरेगा में, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है 100 डेज का तो वो क्या प्रोवाइड करते थे? 100 डेज 100 days अनएम्प्लॉयमेंट employment। अलाउंस। हाँ। तो आपने कोई सर्विस दी नहीं पर तब भी आपको पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अगेन दैट हाँ। इज व्हाट? मनी ट्रांसफर, सिंगल साइडेड, उसके लिए कोई सर्विस गई नहीं तब भी आपको मिल रहा है, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट, और उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक टिप मेंशन रहेगी आगे। बिफोर गोइंग इट, नाउ व्हाट इज द लास्ट पॉइंट, जस्ट सी, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? फैक्टर इनकम। Earning concept। और जो ट्रांसफर इनकम है वो क्या है? Receipt It is a concept। receipt concept. Why it is a receipt concept? Because you are receiving without giving anything in return. And यहाँ पे आप service provide कर रहे हो. When you are going for factor income, you are providing services, then only you are getting the income. Next point we have, it is generally received by the factors of production. जो भी मैंने ऊपर समझाया था, 4 factors of production कौन कौन से होते हैं? Land, labor, capital, entrepreneur, as well as land, labor, capital and entrepreneur. हाँ। These all factor payments or factors of production, और उनको factor payment उनके मिलते हैं। Next, here it is transfer payment. It is generally received by households and government. अब कैसे देख, household को क्या मिलता है? Mainly subsidy. Government को क्या मिल रहा है? Tax. अब गवर्नमेंट हाँ। इज रिसीविंग टैक्स, क्या गवर्नमेंट ने हमको कोई सर्विस प्रोवाइड करी तो हम टैक्स दे रहे हैं? नहीं। गवर्नमेंट का टैक्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो। आज मैं अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात करूं, अभी प्रॉपर्टी टैक्स शुरू हो जाएगा, वी हैव टू पे। सो प्रॉपर्टी टैक्स इज आल्सो अ टैक्स। पर क्या गवर्नमेंट ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी हमको उसके रिगार्डिंग? नो, बट नहीं। गवर्नमेंट ड्यूज आर देयर व्हिच आई हैव टू क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा?
as a particularly property taxes tax. which you are paying that are all transfer. इसीलिए जब आप नेशनल इनकम निकालोगे तो उसमें NIT माइनस कर लेते हैं. अब NIT क्या होगा, I will tell you in the upcoming lecture that NIT is what. Now there is one of the transfer payment from government. See, इसमें साफ साफ दिया हुआ है गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर पेमेंट क्या होगा. गवर्नमेंट का ट्रांसफर पेमेंट सबसे पहला क्या मेंशन है, as you can see, Medical facilities in rural areas. first is medical facilities in rural areas. Second, old Old age age pension. pensions. Second is old age pension. See, medical facilities are available for free. ठीक है. Last, third is free scholarship to students. If the student is performing well, तो उनको क्या मिल रहा है, फ्री स्कॉलरशिप मिल रही है. अभी तो ये एमपी गवर्नमेंट का, अभी सीबीएसई गवर्नमेंट का रूल नहीं है, लेकिन एमपी गवर्नमेंट का रूल था कि अगर आपने 85 प्लस सिक्योर किया तो आपको लैपटॉप मिलेगा फ्रॉम दी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. Yeah, yesterday only my हाँ. MP students the result were declared. 3 students के 85 plus बने and they have approached to the government और उससे का फॉर्म भर दिया और उनको लैपटॉप मिल जाएगा within 1 month. See, अब वो लैपटॉप क्या हो जाएगा उनके लिए, ट्रांसफर पेमेंट की फैक्टर. Scholarship, transfer payment. They have ट्रांसफर worked for पेमेंट their बिकॉज own. उन्होंने कोई सर्विस गवर्नमेंट को नहीं दी बट देन टू दे आर रिसीविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज दैट इज अ aid which is given by the government so as to motivate students. Yesterday only the MP students declare result आया उनका भी. I have taught 4-5 students in the last month only economics. So said they said कि अभी हमारे स्कोर 85 प्लस हो गया and now they are securing laptop. मैं guys great, एक लैपटॉप में कोई दे देना. Now, the top tip which is being given is, see here I told you that old age pension is a transfer payment, but retirement pension, as I already told you, retirement pension क्या रहती है, retirement pension Factor payment. compensation of employee के अंदर आती है और ये हमेशा हमारी factor income होगी. इसको मैं include करूंगा आगे जब when you will solve the practical question related to it, then you will be able to understand. Old age payment, as I already told you, that is a transfer payment, so we will not include in the national income, and retirement pensions will be included in the national income. Is this clear, Rishika? Yes, sir. Now moving further. So today's topic is completed. I am again moving on to the lecture number 8. Shall I start the topic or you want it on some another day?